Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today I am here to discuss one of the speaking topics. Again, the last time I elaborated and explained each and everything about speaking, but the people who are our new listeners on the YouTube, for them, I would like to re-mention things that you will basically get 3 minutes to prepare in the exam, in which you would be getting a role play, and on the role play you can write anything. The best part is this, and even better part is this, that even after writing you can watch it as well, because the last time I told you that in OET speaking there is no video recording, and the examiner who is sitting in front of you, he is just a patient for you. So don't try to over impress him, because he cannot give you any marks or she cannot give you any marks. So neither you have to impress him, neither you have to get scared. तो पेपर के बाद ऑफ कोर्स हम पूछते हैं, सर मेरा पेपर कैसा हुआ, बताओ ना, अच्छा था या नहीं था. अगेन इन ओईटी इट्स नॉट लाइक आइल्स, आपको उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर. तो आपको 3 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम मिलता है और 5 मिनट्स बोलना होता है. ऐसे दो रोल प्लेज होते हैं ओईटी में, तो 2 रोल प्लेज आपको आएंगे ओईटी में. तो आपको ये सबको याद रखना है. सो दीज आर द स्पेशल थिंग्स अबाउट इट. एंड वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसका एडवांटेज क्या है, यानी सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो बाद में मेलबर्न जाके असेस होती है, तो इंडिया में नहीं होती. तो यानी अगर आप ओईटी का पेपर कहीं पे भी लेते हो, उसका मैसिव डिफरेंस नहीं होता एक्सेप्ट योर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट. आपको हमेशा इंग्लिश बोलनी चाहिए. इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एनी इंग्लिश एग्जाम, वेदर इट इज ओईटी, आईएलटीएस और पीटी, आपको इंग्लिश जनरली भी बोलनी चाहिए. ओनली देन यू वुड बी एबल टू परफॉर्म वेल. जब आपका पेपर हो जाएगा, सबसे पहले लिसनिंग का, रीडिंग का, फॉलोड बाय राइटिंग, फिर आपको ब्रेक मिलेगी, आपको लंच मिलेगा, उसके बाद स्पीकिंग टॉपिक शुरू होगा. स्पीकिंग टॉपिक में जो बच्चे पहले करते हैं वो आपको बता देते हैं ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है मुझे टॉपिक पता है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है टॉपिक को जानने का. अगर आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस की है तो आप अच्छा बोलोगे, अगर आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप अच्छा नहीं बोलोगे. सो यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि ओईटी का जो स्पीकिंग टॉपिक है ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है बाकी एग्जाम की तरह, कि आपको अपने आप बनाना है इसलिए मैं पूछ लेता हूँ स्पीकिंग का क्या टॉपिक है. कोई फायदा नहीं. देखो इतना सारा टॉपिक दे रखा है, इतना बड़ा टॉपिक आएगा आपको, तो आपको मतलब वो दूसरा क्या बता सकता है कि यार ये दे रखा है 6 ईयर ओल्ड बॉय है, वो कंडीशन बता देगा 6 ईयर ओल्ड बॉय जिमी है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी मदर को ये प्रॉब्लम है, अब तेरे को ऐसे ऐसे बोलना है. ऐसे कैसे हो सकता है ना, मतलब एट लास्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. एग्जामिनर विल बिहेव डिफरेंटली. ऐसा हो सकता है उसके टाइम एग्जामिनर रिलक्टेंट रहा हो, तुम्हारे टाइम एक्टिव हो जाए, वैसे एक्टिव रहा हो रिलक्टेंट. पेशेंट कैसे भी बिहेव कर सकता है. सो हम जो एक्सक्यूजेस देते हैं बाद में आके, सर उसका तो एग्जामिनर बड़ा अच्छा था, मेरा एग्जामिनर बड़ा बेकार था, उसके लोग बड़े अच्छे थे, मेरे लोग बड़े बेकार थे. व्हाटसोएवर, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, आई नेवर से, ना ही वो गलत है. इट्स जस्ट आवर डेस्टिनी, आवर लक. सो वी नीड टू ट्राई आवर बेस्ट, and then destiny will help us to clear our goals. So please believe that you can crack it, and please try and speak in English 24/7. So again, coming back to the thing, which is the most basic thing, that it is just a topic of 3 minutes to prepare, and then you have to speak for 5 minutes. मतलब प्लीज किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी मत नहीं बोले, तो प्लीज डू नॉट गेट डिपेंडेंट अपॉन द एग्जामिनर. तो 3 मिनट्स में आप क्या करते हो, छोटे से आप अंडरलाइन कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले ये समझो सेटिंग क्या है. वेटिंग रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के वेटिंग रूम में ये सारी कन्वर्सेशन हो रही है. तो इमेजिन करो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहां पे एक वेटिंग रूम में है. You are speaking to the mother of a 6-year-old boy Jimmy who was brought to the hospital this morning with a 2 week history of headache and vomiting. तो 2 वीक की हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड वॉमिटिंग है, और वो 6 ईयर ओल्ड बॉय की मदर है. तो आपको पेशेंट तो समझ आ गया, 6 ईयर ओल्ड बॉय है और उसकी मदर है. और पेशेंट को क्या है, बेबी को क्या है, 2 वीक से हिस्ट्री है उसकी हेडेक और वॉमिटिंग की. द डॉक्टर ऑर्डर्ड एन एमआरआई स्कैन विच रिवील्ड द ट्यूमर एट द बैक ऑफ हिज ब्रेन ऑन द राइट साइड. तो ट्यूमर निकल के आया है बच्चे को. द पेशेंट हैड टू बी सिडेटेड बिफोर द एमआरआई स्कैन टू रिमेन स्टिल. तो उससे पहले हमने सिडेशन दिया था, इसीलिए एमआरआई करने में ज्यादा टाइम लग गया. एट प्रेजेंट वो ऑब्जर्वेशन में है. अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है फॉर अ सर्जरी. मतलब स्कैन हो चुका है, ट्यूमर फाइंड आउट हो चुका है, बच्चा अभी सिडेशन में है, तो मदर के साथ कन्वर्सेशन चल रही है, और उसको एडमिट भी कर लिया गया है सर्जरी के लिए. तो ये टॉपिक है, ये सेटिंग है आपकी, इसको अच्छे से समझना है.
अगर आप सेटिंग को नहीं समझोगे तो बहुत गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेटिंग्स वेरी नाइसली एंड वेरी प्रिसाइजली. प्रिसाइजली का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, एक्यूरेटली. तो प्रिसाइज मींस एक्यूरेट, प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी. तो ये रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिसिशन, ये वर्ड, वोकेबलरी वर्ड. The doctor has informed the patient about the MRI results and the surgery. She is distressed and completely shocked with this information. Obviously, mother के लिए तो शॉक हो जाएगा. तो डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये आपके बेबी की प्रॉब्लम है, और मदर कंप्लीट शॉक में चली गई है. सो एम्पेथाइज विद द मदर एंड रीएश्योर अबाउट हर सन्स रिकवरी. तो उसके साथ एम्पैथी करो, कि एम्पैथी का मतलब उसको उसको काइंड ऑफ उसकी जगह पे खुद को रख के देखो. एम्पैथी कि we do understand that it is very painful and it's a very shocking news for you, but we reassure you that your son will recover nicely. तो ये बात उसको बोलो. Explain why the MRI was delayed. Also, I would like to explain you. अगर मदर पूछती है तो बेस्ट ही है कि why MRI was so late, where is my son at the moment. तो आप कहोगे your son is under the observation at the moment. Actually, he had to be sedated before the MRI scan so that he can remain still during the procedure, due to which MRI took longer time. देखो सेम लाइन बोल सकते हो, यही तो ओईटी की खास बात है. तभी तो मैं कहता हूँ ओईटी इतना आसान है. आप सेम लाइन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर दो, या your child had to be sedated just prior to the MRI scan so that he can remain still while the procedure is being conducted, due to which MRI has taken longer time. आप ऐसे टेंसेस चेंज कर सकते हो, took को has taken. तो छोटी छोटी आप चेंज करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. And tell her that she will be able to see her son shortly. And आपको को we are just going to make you meet your son very shortly. When Naz explained that surgery is very safe and her son will be managed with the medication. तो वो अगर पूछते हैं तो when ask का मतलब है वो पूछेगी. But again, please do not get dependent upon the examiner. तो को also I would like to explain you that the surgery is very safe and your son will be managed with the medication. So please do not worry. अब देखो सेम लाइन बोल के आपको क्या बोलना है, so please do not worry. इतना आसान है, बस ऐसे आपको पेशेंट को एनकरेज करना है. और पेशेंट को रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव वे टू मदर क्वेश्चन अबाउट द रीअकरेंस. तो मदर पूछेगी डू यू थिंक दिस ट्यूमर कैन अकर अगेन. सो कहो, ये वाला पॉइंट को आप अपने आप नहीं बोल पाओगे. अगर मदर नहीं पूछ रही, आप इस पॉइंट को स्किप कर दो, क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करो. तो अगर नहीं पूछती है रीअकरेंस का, तो हम जान के क्यों बताएंगे कि रीअकरेंस नहीं है. बस आप वैसे कह दो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू इन योर केस. अगर वो नहीं बोलते तो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू इन योर सन केस ट्यूमर इज नॉन कैंसरस एंड इट इज never likely, it is not likely to return. So please do not worry and we assure you that, इसके साथ connect कर दो दोबारा, and we assure you that surgery is very safe and your son will recover very nicely. And MRI test after, and we would also like to provide you the information. अब इसको information की तरह दो. We would also, तो आप ऐड क्या कर रहे हो, मेन बातें we would also like to. आप सिर्फ इतना करते हो ओईटी में, बाकी सब दे रखा है यार आपको. We would also like to tell you. बस ऐसे we would like to, ये तो सबसे बेस्ट है. We would also like to tell you that MRI test after operation for some months would be required. बस थोड़ा टेंस लगा दो, चाहिए होंगे. Would be required, would be needed, ऐसे ये वाली दो तीन चीजें भी याद कर लो. Would be needed, आपको ईटी में कुछ नहीं. Would be needed so that the potential would be needed so that the monitoring can be done so that there is no relapse of this tumor. As I have told you earlier that it is not likely to return, but still we need to keep a check on it. हमें इसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा. Also there might be few problems which your son may face, like there is a possibility of problems with the physical disabilities or behavior or speech difficulty, but we would like to reassure you that follow up care after the discharge will be provided. And for this, occupational therapist will be there to help with the behavioral difficulties and the speech difficulties. And also your son would be connected, you would be connected to the caregivers for all these possibilities. Further, physical therapist, speech therapist and visiting nurses would also be provided you for all the things which are needed for all the counseling that is required for the for the speech difficulties. Physical therapist will be provided for the physical abilities. तो ये सब बातें उसको बताओ. Encourage her to look after herself and not feel. And at last, अगर वो कुछ बोलती है कि मैं तो बहुत उदास हूँ, काश मैं ये कर लेती वो कर लेती, कहो please understand it is not your fault. You should not feel guilty at all. It is not your fault and you just need to take care of yourself. And if you will take care of yourself, only then you would be able to take care of your son. We understand it is hard,
but you have to do it for yourself and your son. If you will be positive, your son will recover sooner. So this is from my side. Now I would like to give you a leaflet which contains a leaflet to give the emergency department. So now please rest and your son would be meeting you soon. Again topic के हिसाब से your son will be meeting you soon. So there is nothing to worry, and by that time, जब तक by that time, if you need anything, we are here to help you. ऐसे एक OET का टॉपिक होता है, तो प्लीज इट इज नथिंग डिफिकल्ट, सब कुछ दिया है, बस आपको टेंसेस लगाने होते हैं. अब मैं प्लीज और अगेन मैंने आपको बताया, जब भी मेरी स्पीकिंग की रिकॉर्डिंग, डॉक्टर बीकेएम की स्पीकिंग जब भी सुननी है, कम से कम 4 बार सुननी है, तो आपको 100% फायदा होगा और आपकी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट होगी. उसको पीछे पीछे बोल के देखो, तो मैं आपको एक बार बोल के दिखा देता हूँ. Good morning. My name is Bhupesh. I am the charge nurse for the day. So how may also I would like to tell you that your son Jimmy, now he has been found with a tumor which is at the back of his brain on the right side. Oh my God, doctor! But this is very shocking for me. Like, I don't know, where is my son? Well, please calm down. We do understand that it is a very shocking news for you, but we would like to tell you he would be coming soon, as he had to be situated before the MRI scan, which was a diagnostic test to find out whether there is tumor or not. After this MRI scan, we have found there is tumor, and so he had to be sedated for this MRI. That's why it took a longer time. But right now he is under observation, so he would be coming to you very soon, and please do not worry. Second thing, I would like to tell you that this is a known cancerous tumor and it is not likely to return, and it is just the known cancerous mass. So if we will do the surgery, we assure you that after that your son will recover nicely. So mix up your points. Okay, but doctor, this is like really shocking news for me. We do understand and we have complete empathy and sympathy for you. But I would like to tell you that there is nothing to worry, as I have just mentioned that it is non-cancerous. So it is all good, and the surgery that is going to be done on your son is safe. And if he will have any pain, that pain will be managed with the medications. But doctor, I have heard that it can return. As I have just mentioned, it is not like, as I have just mentioned, isko yaad karo, as I have just mentioned that it is not likely to return. So please do not worry. Further, we will keep conducting MRI test even after the operation for some months for monitoring. So we will keep on the monitoring of your child, and we will repeat these MRI tests to make sure that it does not return. And if there would be anything, then it would be dealt very quickly. So please do not worry. Okay, doctor, but I am very upset. Well, we do understand it's very hard time for you, and it is not easy to hear about your son. But that is fact, and at the same time, we would like to tell you that it is purely, it can be your son can be saved with just a surgery, and it is very safe, and there is nothing to worry. Also, we would like to make you familiar that there are potential problems which can happen after the surgery, such as there is possibility of problems with the physical abilities or behavior or speech therapies. But don't worry, after the surgery, we will provide you physical therapist along with speech therapist and visiting nurses and support groups who would be visiting your home after the surgery to help your child in quick recovery. And if there is any difficulty, like speech difficulties or others, then these professionals will help you at your home, so that your son can feel absolutely normal and there is no complication after the surgery. Well, thank you, doctor, but I just am wondering what will happen. I think I have not given the best of care to my sons. That might be my fault that this cancer has happened. See, please understand, it is not your fault. Please do not feel guilty. It is nobody's fault. It is something that is pure, that is something that is beyond human's hand, and it is not your fault at all. So you need to understand one thing, that first, it is non-cancerous. I would like to repeat that. Surgery is safe, so your son's recovery chances are very high. But you need to understand that you need to be positive, because your positivity for yourself will make you more positive, and at the end of the day you can give this positivity to your son.
So if you will not be positive, then your son will suffer more. Please try and understand. Now we have got this problem in our hands, and we assure you that surgery can be done and this problem can be solved. But at the same time, your positive attitude will be required for your son's recovery. So please do understand that it is very important. Okay, okay, nurse, I will try to be. Well, that's great. And now, please relax and sit on the chair, as your son is right now under observation and he would be coming out very soon, or you may be able to see him in the emergency department. And after that, we will perform the surgery with your consent. Is it okay? Well, okay, nurse. All right. And if you need anything, we are just nearby. Please feel free to ask anything if you have any problem. So that is how you do your speaking task. Please listen to this recording 4 times at least, 5 times, that is your benefit, 6 times, even more. If you listen to different speakings one time, there is no use. एक इंग्लिश गाने को एक बार सुना, कितना समझ आएगा पहली बार सुन के? कुछ भी नहीं. उसको 5 बार सुनोगे, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा. 10 बार सुनोगे, ऐसा लगेगा गाना ही आपने गाया. This is how you practice speaking. This is the secret of speaking. You need to understand, if we will practice one speaking many times, we will learn more. Rather than doing many speakings one time, we will not learn. एक बार स्पीकिंग करने से कुछ नहीं होता. सेम स्पीकिंग को बार बार करके आप एक्सपर्ट बनते हो. आपको लगता है मैं सेम स्पीकिंग कर रही हूँ, मैं रट्टा मार रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप एक स्पीकिंग करके रट्टा मार रहे हो, तो हम बचपन से आज तक जो भी बोलते आए हैं सब कुछ रट्टा ही मार रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. सो प्लीज रब द क्लाउड्स फ्रॉम योर साइकोलॉजी कि अलग अलग स्पीकिंग करनी है, अलग अलग करनी है. एक स्पीकिंग को बार बार करने से यू विल बिकम अ विनर. सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट telling you the whole lot about speaking. Thank you so much.